तो हमने यहाँ से आज शुरुआत की है ब्रॉन्स्टेड कैटेलिसिस का। पेज नंबर आई थिंक 228 रहेगा। यस 229 मैडम। यस। तो ब्रॉन्स्टेड कैटेलिसिस लॉ में क्या देखा, इन द मोस्ट केमिकल रिएक्शन देयर आर एडिशनल प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके, दैट मीन्स द H प्लस को हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। We will now examine how we gather data on the timing of these proton transfer activities in order to choose the precise mechanism. Precise mechanism को choose करने के लिए order to choose the precise mechanism, consider the overall reaction. एक reaction दिया हुआ है, okay, so this reaction we get the product, okay, और नीचे इसका mechanism दिया हुआ है, the mechanism and it's give the rate determining. Okay, see here mechanism with varying proton transfer time steps can be written. It should be alter the rate determining step. Okay, so here SH, SH and BR, these are the given groups. Okay, so here rate determining step and we transfer this pH plus proton transfer हो गया है and then we get the product. Then here is the fast reaction and then we get the this another product. Okay, so यहाँ पे जो भी rate determining step है, जो कि slow step है, okay, yes, this one is a slow step. We can write here dP divided by dt which is equal to minus d concentration of SH से SH कहेंगे divided by dt which is equal to K1 SH. Okay, K1 is the rate constant, velocity constant भी इसे हम लोग बोल सकते हैं. Okay, K1 is the rate constant or we can say this a velocity constant. Okay, this could occur during the RDS. RDS means rate determining step. क्या होगा देखो, BR SH BR. Okay, then minus BH हुआ, that means ये सब निकल गया है. Okay, and RDS, that is the rate determining step. Okay, so we get the product here like that. Here we can write rate which is equal to dP by dt which is equal to, ऐसे लिखोगे dP d concentration of P divided by dt is equal to minus d concentration of SH divided by dt, okay, which is equal to K1 concentration of P and concentration of SH. Okay, नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है देखो, डिटरमाइनिंग स्टेप. नेक्स्ट में क्या दिया है, हियर द both steps are involved, K1 and K2. K1 is the rate constant for the forward reaction and K2 is the rate constant for the backward reaction. If the reaction is in direction, okay, we can say the forward reaction. So K1 is the rate constant of forward reaction, and if the reaction direction is like this, then it should be a backward direction or we can say reverse reaction. Okay, so K2 is the rate constant of the reverse reaction. Here we get the different product on a different rate constant, okay, and finally we get the product P. See here, from this step the reactant is only converted into the product. From here reactant have choice to go back into the reactant. Okay, see this is the intermediate step and it's have a choice whether it is move towards the reactant step, first step, but here if it moves toward the right then it is converted into the प्रोडक्ट डायरेक्टली. ओके, प्रोडक्ट में डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो रिटर्न नहीं जा सकती. ओके, सी द रेट कांस्टेंट इज गिवन हियर. सेम वे dp by dt is equal to, yes, this is the overall rate constant equation. ये सब जॉइंट है अभी ना. यस, योगिता मैडम, योगिता पार्क के, यस, जॉइंट है. हेलो हेलो, योगिता मैडम जॉइंट है क्या? तो यस, आवाज आ रहा है सबको प्रॉपरली? सो द इक्वेशन इज गिवन हियर, dt बाय dp बाई dt विच इज इक्वल टू, ये देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, K1 को भी इन्वॉल्व करेंगे, K2 को भी इन्वॉल्व करेंगे. से हियर K1 एंड K2 बोथ आर इन्वॉल्व. ओके, K-1 इज ऑल्सो देयर, ओके, एंड K2 इज ऑल्सो देयर. ओके, सो सी हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस K2, एक K2 जो यहाँ पे दिया है वो K2 आएगा अपना यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे आएगा K-1. ओके,
Yes, what is the correction? See here, here is the K1 is the right, here is the K minus 1 and K2 is at the here. Okay, yes. So dp divided by dt, which is equal to minus dsh divided by dt, which is equal to, yes, which is equal to क्या था, तो K1 K2 that is a K1 a forward reaction और plus K2 ये forward reaction. Okay, B concentration of B concentration of SH divided by K minus 1, यहाँ पे backward reaction है. okay, यहाँ पे जो backward reaction दिया गया है इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, रेट कांस्टेंट K minus 1. ओके, सो K minus 1 BH, यस यहाँ पे दिया है देखो BH. ओके, प्लस K2 दिया गया हो. Okay, which is equal to K2 by S2. See the equation like that. ये जो equation दिया हुआ है, the form of the equation is like that. See here, I am writing K1, K2, concentration of B, concentration of SH. Okay, yes, and this entire term, okay, divided by this term. Okay, so we can write dividation side K minus 1 concentration of BH plus K2, okay, which is equal to, अब इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, डेट इज द K2 लाइक दैट. ये मिलेगा. सी ऐसा है, अभी BH प्लस दिया हुआ है तो K1 निकल जाएगा मान लो. ओके, K-1 साव निकल गया. देन हियर इज अ BH प्लस इज देयर, so here is a B and B cancel out, H and H is also cancel out, so remaining is a S minus, that is here S minus ये बचेगा. okay, yes, and remaining K2 is given. तरह से आएगा. Here different equations are given. We really would like to show the both of the version of the rate law are comparable and that either one will truly approach the catalysis of HO minus. okay, तो कौन सा अप्रोच करेगा, दिया हुआ है देखो, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डी टी विच इज इक्वल टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस माइनस. ओके, सो एस माइनस का वैल्यू जो दिया है, तो एस माइनस का वैल्यू इज लाइक दिस. ओके, तो ये वैल्यू ये हमने आगे ही देखा. एस माइनस का वैल्यू क्या दिया है देखो, पहले वाली स्लाइड में, पहले वाले पेज में हमने देखा है, यहाँ पे देख. ओके, विच इज इक्वल टू K2 एस माइनस. ओके, इसका वैल्यू क्या है, तो ये पूरा इंटायर टर्म है, आगे दिया हुआ है. इंस्टेड ऑफ के एस माइनस की जगह पे ये पूरा वैल्यू हमने डाला है, K1 K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एस, K-1 concentration of B H plus K2 which is nearly equal to K1 K2 concentration of B SH and K-1 concentration of B H2. okay, तो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद सी वी गेट द आंसर लाइक दैट. K1 K2 K1 by K2 which is equal to concentration of BH plus S minus divided by concentration of B, okay, concentration of B and concentration of SH. You can write here dP by dt which is equal to BH plus S minus concentration of B concentration of SH K2B concentration of SH divided by concentration of B. okay, ये देखो यहाँ क्या हुआ है. okay, which is equal to K2 S minus. yes, again यहाँ पे K2 S minus आया देखो, ये जो टर्म दिया है ना सबको मिला के दिया हुआ. यार डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है H प्लस एस माइनस बी. ओके, और K2 वाला टर्म जो था, ओके, देन वी गेट द टर्म K2 S minus. ओके, देन आगे K अल्फा SH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय concentration of SH. okay, and here from this equation we get the concentration of S minus. see here S minus which is equal to, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा KASH SH divided by H plus. okay, देखो क्या हुआ,
डिवाइडेशन में गया, एस एच में ये मल्टीप्लाई हो गया। यस, ये देखो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन है, के अल्फा एस एच, ओके, यस, मल्टीप्लाई बाय दिस एस एच, कंसेंट्रेशन ऑफ एस एच, ओके, एंड डिवाइडेड बाय ये जो एच इधर में मल्टीप्लाई था वो डिवाइडेशन में रहेगा, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड विच इज इक्वल टू एस माइनस। यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू एस माइनस। ओके, हियर वी कैन राइट एस माइनस इज इक्वल टू, एस माइनस का वैल्यू ये मिला है हमें कि अल्फा एस एच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस एच डिवाइडेड बाई एच प्लस इज इक्वल टू एस माइनस। ओके, so we put this value here which is equal to k a s h s h concentration of OH minus and concentration of OH। अभी ये कहाँ से आया, सी सी ये कहाँ से आया, सो वी हैव द इक्वेशन दैट इज अ के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस प्लस ओ एच माइनस। ओके, तो ये ऐसा इक्वेशन रहता है। ओके, तो हमने क्या किया, जो एच ओ एच माइनस था, एच का वैल्यू निकाला, का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाई बाय एच प्लस मल्टी इंटू बाय इंटू ओ एच माइनस। ओके, सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ एच माइनस, सो हियर simply we put the h plus here and OH minus divided by KW। Okay, so by using this equation we put the value here, see K alpha S instead of H plus यहाँ पे क्या आया, KW आया, and multiplication side में क्या आया, OH। okay, concentration of OH minus, write this। okay, so again solve this equation, dp by dt is equal to K2 K अल्फा एस एच डिवाइडेड बाय के डब्ल्यू को रीअरेंज किया इक्वेशन, देन वी गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस एच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। ओके, इक्वेशन को रीअरेंज किया, देन वी गेट द इक्वेशन। नाउ वी विल नाउ लुक एट द लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच। यस, ये एक अप्रोच दिया, वी विल नाउ लुक द लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच विच अलाउज अस टू डिस्टिंग्विश दिस। Okay, so as a preliminary consideration, what is the nature of the rate law for each the mechanism? Okay, each mechanism में nature of the rate law था, वो कौन सा था ये देखना है। Then in a solution there may be a more than one acid or base present, we will illustrate for water as a solvent, but this is a more general। okay, so water ए वन और ज़्यादा, एक से ज़्यादा एसिड और बेस रहेगा, सो वी विल इलुस्ट्रेट फॉर वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, बट दिस इज अ मोर जनरल। सो हियर सम बेसिस आर गिवन, H2O OH minus A1 minus A2 minus like that, and some acid are given here, H3O plus H2O HA2 like that। ओके, so देखो एसिड के में हम लोग दिखेंगे HA और बेस में हम लोग दिखेंगे खाली A माइनस। ओके, दैट इज A1 माइनस A2 minus and like that, HA1 HA like that acid के। okay, ये क्या देखो, फॉर बेस कैटालिसिस देयर आर टू possible situation। okay, if you are considering for base catalysis then there are the two possible situations are given here। so one is a specific base catalysis। ओके, स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस में क्या दिया है, रेट विच इज इक्वल टू, रेट जो रहेगा क्या रहेगा, रेट विच इज इक्वल टू के, दैट इज द रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई। ओके, तो एक्स एंड वाई दिस आर द टू रिएक्टेंट ये रह सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट हियर इंस्टेड ऑफ दिस x and concentration of x and concentration of y। okay, that is the rate depend on the concentration of HO minus and not on the concentration of A1 माइनस एंड A2 माइनस। यहाँ पे दिया है देखो, बेस को हम लोग देख रहे हैं, तो दैट इज द रेट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, यस, OH minus means these are the depend only on the rate is the depend only on this vector। okay, and not on the A minus and A2 minus। okay, these are the bases। okay, see here, these are the bases, A2 A1 minus and A2 minus, these are the bases। okay, so this is a specific base catalysis and in a general base catalysis में यही क्या रहेगा देखो, the rate depend on the concentration of every acid in a solution। okay, so rate is depend on the concentration of every acid of a solution, there will be a term in the rate law for each possible acid through the sum contribution may be a too small to matter।
ओके यस में मतलब क्या है कि वी हैव टू कंसिडर ऑल द एसिड विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. Okay, that means we have to take the concentration of this all acid in the rate equation. So here we have to write the all acid concentration simple. Here they can give the equation KOH, concentration of OH minus X plus Y plus KW, concentration of H2O X, concentration of X, concentration of Y, K1 A minus 1, concentration of A minus XY, concentration Y plus K2, concentration of A2 minus concentration of X and concentration of Y. Okay, yes, which is equal to summation. क्या दिया है देखो, summation, इसे summation कैसे, summation K cat means catalysis I. Okay, A I minus, okay, I minus means it is a number, whether it is 1 2 3 4 whatever. Okay, yes, concentration and the concentration of X and the concentration of Y. Okay, so equation, here we get the equation which is equal to summation. Here we can write rate which is equal to summation of K catalysis I means the number of stage. Okay, that means 1 2 3 4 number of. Okay, and AI minus, AI means again AI, instead of I we can write any number. If that 10 number of reactants are there, then we can write here 10. Okay, and the concentration of X and the concentration of Y. So we can write the general rate for a general rate catalysis, general base catalysis, we write the equation rate is equal to summation of K cat means catalysis, I means the number which are the number of reactant involved, AI that are the number which are the number of acid involved, and X concentration of X and concentration of. Okay, now in the next step, this is the empirical definition. If HO minus catalyze a reaction and not other bases in the solution, then the reaction is specific base catalyst. Okay, then reaction को क्या कहेंगे, specific base catalyst when the reaction is catalyzed by OH minus only. Okay, OH minus only से catalyze हुई होगी reaction, so we can call them as a specific base reaction. क्या कहेंगे उसे, specific base reaction. Okay, we call them as a specific base reaction. क्या कहेंगे, specific base. यस, आगे क्या दिया है देखो. नेक्स्ट वन, द Hammett acidity function. If all the bases in the solution are catalyzed, the reaction then it is the general base catalyst. See क्या दिया है, if all the bases in the reaction catalyze, the reaction is it a general base catalyst. Okay, देखो खाली बेस कैटालाइज की करता होगा रिएक्शन, तो वी कैन से दैट द इट इज अ स्पेसिफिक बेस कैटालाइज, एंड इफ the all bases present in the solution are catalyze the reaction, then it is a general base catalyzed reaction. Okay, so then it is called as a general base catalyzed reaction. Yes, so these are the about the base catalysis. Okay, so here two conditions are given. One is a specific base catalysis, specific base catalysis. Okay, and second one is a general base catalysis. Okay, specific base catalysis जो रहेगा उसमें एक only one base work as a catalyst. Okay, and in general base catalysis में क्या रहेगा, जितने सारे base present reaction में they are all taking part in the catalysis reaction. Okay, it's called as a general base catalysis. Okay, next point is the Hammett acidity function. Okay, आवाज आ रहा है clearly? Give the reply. ओके, क्लियरली दिख रहा है जो भी प्रेजेंटेशन चल रहा है वो. नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ Hammett acidity function. Okay, so see, only diluted aqueous solution can be used to determine the acidity of a weak acid using the standard acid ionization constant. Okay, so here they are directly say that only weak acids, solution of a weak acid. Okay, so anybody can tell me the example of weak acid? वीक एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है, बताइए आप में से कोई भी बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? वीक एसिड क्या होता है? ओके, द एसिड विच इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट
is called as a weak acid. Okay, so the example of a weak acid are the general example of acetic acid. Okay, so we are considering the acetic acid is a weak acid. Okay, so we are directly written as here H3COOH, the acetic acid, and which is a weak acid in a nature. Okay, so here only diluted aqueous solution can be used to determine the acidity of weak acid. So here acetic acid we are taking as an example using the standard acid ionization constant. Okay, the Hammett acidity function is a more inclusive indicator for the acidity that is in the theory hold true for the any acid. Okay, while the pH is the used to represent the acidity of aqueous solution, the Hammett acidity function HO instead refer to as a pure acid. Okay, so here Hammett acidity function है उसमें हम लोग HO को यूज करेंगे. Okay, so here they are directly given as the pH is equal to minus log of AH plus, that is a for a dilute aqueous solution. Okay, pH is equal to negative log AH plus. ये किसके लिए हुआ? फॉर अ डाइल्यूट एक्वायस सॉल्यूशन के लिए. एंड फॉर अ प्योर एसिड वी हैव टू राइट H0 विच इज इक्वल टू माइनस लॉग AH प्लस फॉर अ प्योर एसिड. ओके, तो दिस H0 इज कॉल्ड एज अ Hammett एसिडिटी फंक्शन. क्या कहेंगे इसे? Hammett एसिडिटी फंक्शन. ओके, तो H0 इज कॉल्ड एज अ Hammett एसिडिटी फंक्शन. क्या कहेंगे इसे? Hammett एसिडिटी. Okay, so the general reaction is given here H plus plus B which give the H plus. Okay, देखो एसिड प्लस बेस दोनों साथ में आए, क्या बन गए? Here as AH plus is the activity of H plus which is a many which in a many dilute solution is approximately equal to the hydrogen ion concentration. Okay, क्या रहेगा? Which is approximately equal to the hydrogen ion concentration. That is why the pH of is often defined in the term of concentration of pH. Okay, so pH जो हम लोग बोलते हैं, what is the definition of pH? Anyone can tell me the definition of pH? Okay, yes, concentration of H plus ion. The concentration of H plus ion present in the solution is called as the pH of that particular solution. Okay, so here we can say that the in the definition of pH, concentration of H plus ions are. Okay, at first glance it may be seen that Hammett acidity function is simply generalization of the concept of pH concept. Okay, for use of a non-aqueous solution this is especially so, since in a water the pH and H0 to refer to the same quantity. Yes, water के लिए if you are considering water, तो water का pH का value and water का H0 का value which are okay. Yes, what do you mean by HO? HO का मतलब क्या होता है? That is a Hammett acidity function. Okay, HO का मतलब क्या होता है? Hammett acidity function. Okay, so here we can say that refer to the same quantity. However, the hydrogen ion of the Hammett acidity function is a more than a generalization of the pH concept. Okay, its real genius lies in that AH plus does not necessarily present an actual chemical species of the identity of H plus, but rather an acid ability to protonate weak indicator bases P specifically via the reaction. Okay, so here is the one reaction is given. See, this reaction gives the weak acid H plus. Okay, so BH plus एक reaction दिया हुआ है, तो BH plus give us a H plus plus B. क्या मिलता है यहाँ पे? H plus मिलता है, क्या मिलता है? H plus मिलता है plus. Okay, the extent of this ionization will depend on the AH. इसके ऊपर डिपेंड रहेगा AH plus के ऊपर, that is a acid के ऊपर डिपेंड रहेगा. Okay, so here we can write the equation K ion is equal to concentration of BH plus divided by concentration of AH plus and concentration of. Okay, taking the negative logarithm on the both side. Okay, so both side we have to take the negative logarithm and rearrange, give the Henderson Hasselbalch equation for the indicator base. Okay, so here by taking the logarithm of both sides, okay, so we have to take the negative logarithm on the both side, then we get the equation and which named as the equation as the Henderson Hasselbalch equation. Okay, this is the here we are taking the negative logarithm, that is the K ion is equal to negative log AH plus minus log concentration of BH plus divided by B.
okay, which can be rearranged to, okay, can rearrange this and we have the values pKin is equal to H0 minus log concentration of B0 divided by B concentration of B. Okay, here H0 is the same value which is equal to log AH plus, which is the Hammett acidity. Okay, what is the H0 means? So it is meaning of the Hammett acidity. So here we can write Hammett's acidity function minus log concentration of BH plus divided by B are the same equation. Okay, or we can write same here. This HO value is find out by using this equation. Okay, HO जो था यहाँ पर रह गया और the remaining term that is the minus log ये वाला पूरा उस साइड चला गया. Then we get the plus. Okay, that means pKin minus log concentration of BH plus divided by concentration of B. Okay, get the equation like this. Okay, from this it is apparent to that H0 represent the acid ability to donate a hydrogen ion. Okay, H0 जिसे हम लोग Hammett acidity function कहते हैं, it have the ability to donate a hydrogen ion as measured in the term of its ability to shift the equilibrium between the B and BH plus towards the BH plus. More negative values of HO correspond to the stronger Bronsted acid with a greater hydrogen ion transfer ability, while less negative ones indicate the weaker Bronsted acidity. Okay, तो लेस रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वी कैन कॉल देम एज अ वीक ब्रॉन्स्टेड एसिडिटी, और जो स्ट्रॉन्गर रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गर ब्रॉन्स्टेड एसिड कैपेसिटी. The values of H0 has been experimentally determined for the number of strong acid by measuring the ratio of BH plus to BB by using a weakly basic aromatics like 2,4,6 trianitroaniline. Okay, so here is the structure of trianitroaniline. Here is the basic structure of the benzene right here NH2. Then this is called as a aniline. Okay, benzene का structure कुछ ऊपर नहीं आया, 1 2 4 1. Here is the NH2. Okay, and it is the 2 O O6 tinitro. Nitro means NO. Okay, so here we are taking the aromatic base like 2,4,6 trinitro-aniline, various nitrotoluenes. Okay, nitrotoluenes means if the toluenes are there, we can say that toluenes में क्या होगा, instead of NH3 वाले की जगह पे क्या रहेगा, okay, instead of NH3 we have the CH3. Okay, and various, they are saying various nitrotoluenes means it is a, whether it is the NO2 और NO2 कौन से भी पोजीशन पे NO2 लगा रह सकता है. ओके, एंड अ ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन. ओके, अब देखो ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन कैसे लिखेंगे अभी, CF3 FF3. ओके, इंस्टेड ऑफ ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन को हम लोग इस तरह लिख, ट्राइफ्लोरो. ओके, 3 फ्लोरीन है, 1 1 2 फ्लोरो, एंड सेम वे यहाँ पे. Okay, so we can call them as a 1 2 3 trifluoro, the methyl group and the benzene. Okay, so this is a trifluoromethyl benzene. Okay, yes, as the indicator of the, okay, these are all the topic which we are seen today. Okay, so here some example are given. Solve example, explain the Bronsted catalysis. जो हमने अभी देखा वही दिया हुआ है, देखो. The solution rate law are comparable and that are either one will truly approach the catalysis by HO minus. Okay, so we have to write this all equation. Okay, जो हमने देखा है ना अभी वही इक्वेशन यहाँ पे आंसर है. ओके, हियर सेम दिया है, देखो यहाँ तक सेम आंसर दिया हुआ है जो हमने. व्हाट इज द हैमेट एसिडिटी फंक्शन, तो यहाँ पे हमने हैमेट एसिड का जो हम शो करते हैं H0.
Okay, so solution, the Hammett acidity function is a more inclusive indicator of acidity that in the theory hold true for any acid, while the pH is a used to represent the acidity of a solution. The Hammett acidity function H0 is referred to the pure. Okay, so here they are given pH is equal to minus log constant AH plus for a dilute aqueous solution, and H0 is equal to minus log AH plus for a pure acid, for a pure. Okay, so we can write here H plus B give us a pH, ये भी हमने देखा है. Then explain the specific acid base catalysis. Okay, क्या दिया है? Explain the specific acid base catalysis. क्या है? Solution, the quantity of protonated solvent molecule SH plus is inversely correlated with the rate of reaction. The only way that the acid catalysis AH contribute to the rate accelerated by the shifting the solvent S and AHS chemical equilibrium in favor to the SH plus. Okay. This type of catalysis frequently occur in a polar solvent like water, where as a strong acid are present. Okay. Polar solvent water. वाटर को हम लोग पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं बिकॉज इट कैन बी जैसा H प्लस और OH माइनस डिवाइड हो जाता है. हियर S प्लस AH is equal to SH plus A minus. These are the given answer. Next one, check point boron, B and gallium are used for the dot type of semiconductor. बोलो. Yes. टाइप कौन से टाइम में आएगा ये? P टाइप, N टाइप बोलो. P टाइप. ओके. सिलिकॉन इज यूज फॉर डॉट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. कौन सा आएगा बोलो. यहाँ पे नीचे आंसर दिए इसके. देखो समरी of the answer. P type, N type and photocatalysis. Okay, these are the answer. Okay, तो आप ये पढ़ लेना पूरा क्या है वो. यहाँ पे जो अपना यूनिट था ये वाला पूरा हो. कैसे आगे तो एंजाइम कैटालिसिस क्या है ये. तो जो भी असाइनमेंट मतलब ये जो दिए हुए क्वेश्चन है उसको आप करो बराबर से आ जाएगा. तो टू रीड दिस चैप्टर slowly and give this answer. एग्जाम में तो आपको कुछ MCQ वगैरह पूछने वाले नहीं है. So these are the or summaries of this unit. ये दूसरा पॉइंट हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे. दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं अभी. इसे लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, तो वी आर मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट आर द एंजाइम कैटालिसिस. क्या है वो? एंजाइम कैटालिसिस. यस, एंजाइम कैटालिसिस की रिएक्शन क्या होते हैं ये सब हम लोग इस यूनिट में देखने वाले. ओके, एग्जाम का टाइम टेबल सबको मिल गया है. यस, नहीं मिला? तेरी एग्जाम का टाइम टेबल नहीं मिला? तेरे हाँ, तेरे एग्जाम का टाइम टेबल नहीं मिला अभी तक आपको? त्या ग्रुपमध्ये सबको तो मिल गया है. ऐसे कैसे? तो रखो. कुठलं कॉलेज आहे? नाही भेटलंय तुम्हाला टाइम टेबल? दोघा कॉलेजवाल्यांना नाही भेटलंय? ओके, मला वाटलं की सर्वांना भेटलंय. यस, वेट. हां, प्रॅक्टिकल पण घ्यायचे तुम. थोडं थांबा जरा. जरा शोधतो आणि यस, मैं अभी उसको भी रिपीट कर रहा हूँ. जस्ट वेट. वेट करो थोड़ा. देखता हूँ, बोलता हूँ. असाइनमेंट आप सबको मिला है?
यस यस। ओके, एक पेज का ही प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये फिलहाल जो हमारा लेक्चर है उसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द लेक्चर दैट मीन्स वो द कंप्लीटेशन ऑफ दिस टॉपिक, दैट मीन्स 9 बजे के बाद हम लोग क्या डिस्कशन है, टाइम टेबल मैं आपको शेयर करूंगा। यस, हम लोग देखेंगे कि ये टाइम टेबल आपके लिए भी है क्या, सेकेंड ईयर वालों का आया है शायद, उसमें भी फर्स्ट ईयर वालों को भी दिया हुआ है, वही आपके लिए एप्लीकेबल है क्या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा वेट करो आप, मेरे को वो पीडीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो ये लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसको ढूंढने में नहीं तो अपना लेक्चर का टाइम निकल जाएगा। ओके, अप टू 9 PM हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, देन वी सी वॉट एवर द टाइम टेबल ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, नो फर्दर डिस्कशन, यहाँ पे लेक्चर के लिए कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ओके, सो एंजाइम कैटालिसिस इज द नेक्स्ट यूनिट। So here in this lecture we have to study the key lock mechanism for the enzyme catalysis. Okay, derive Michaelis Menten equation for the enzyme catalyzed reaction. Study the influence of a temperature and a pH on the enzyme catalysis. Okay, and know about the optimum temperature for the enzyme catalysis. Okay, so we have to all these are the learning outcome, learning objective of this. Okay, so here they are giving some introduction part. enzyme क्या है, कैसे काम करता है, तो इसको थोड़ा तो सीधा एक बार रीड आउट कर लेंगे। देखो, लाइव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ए केमिकल नोन एज ए, ओके, द ऑर्गेनिज्म लाइव एक्टिविटी डिपेंड ऑन इट्स, यस, एंजाइम के ऊपर ही लाइव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ड्यूरिंग द 19th century द फर्स्ट एंजाइम वाज डिस्कवर इन द मिल्क एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। द टर्म एंजाइम वाज लेटर एम्प्लॉयड बाय द प्लेस ऑफ द फर्मेंट। ओके, फर्मेंट की जगह पे एंजाइम का किया गया है, ये वर्ड पहले इसे हम लोग फर्मेंट कहते थे, देन वी हैव यूजिंग द एंजाइम टर्म। ओके, इन द अर्ली ऑफ 1830 फर्मेंट्स कैन बी आइदर लाइव और नॉन लिविंग। फर्मेंट क्या रहते हैं, इधर लाइव और नॉन लिविंग सेल, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट assume they must contain living cell. Okay, so here is a scientist named Sunmer defined the structure of an enzyme in 1920 enzyme का structure, which lead to a better understanding of the characteristic of enzyme are still a well liked area of research that lots of people are required to study. Enzyme is a big area. Enzymes are frequently big molecule that can only function as a catalyst when folded into a specific concept. Typically, molecules that an enzyme used to catalyze the reaction are referred to as the enzyme substrate. Okay, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, enzyme substrate. Enzymatic catalysis is a unique in a two way. First, it is a frequently discovered that an enzyme can distribute in the two substrates that are extremely similar. Okay, dramatically boosting the substrate reaction rate while having the considerable lower impact of the other. Second, the rate gain of the factor of 10 to 6 have been noted. Rate enhanced by the enzyme catalysis are frequently quite substantial. Okay, तो ये सब इसका इंट्रोडक्शन बार पढ़ लेना, वैसे तो कुछ क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं लगता, यस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, एंड आई थिंक दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन लॉ, ओके, रेगुलर एमएससी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमएससी कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस में जो मिचालिस मेंटेन लॉ है इसके ऊपर क्वेश्चन, वी हैव टू केयरफुली क्या है मिचालिस मेंटेन। फंक्शनल प्रोटीन एंड बायोलॉजिकल कैटालिसिस आर नोन एज, ओके, फंक्शनल प्रोटीन जो है और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है तो क्या कहते हैं, एंजाइम हैव अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर, एंजाइम का क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, ओके, दैट अलो देम टू परफॉर्म देयर यूनिक एक्टिविटी, यस, दे आर स्पेसिफिक इन द नेचर, यूनिक एक्टिविटी उनकी है क्या, कौन सा भी एंजाइम किसी पे जगह पे काम नहीं करेगा, जिसकी जगह वहाँ पे है वो स्पेसिफिकली वही काम करेगा। ओके, सो हियर वी कैन से दे परफॉर्म देयर यूनिक एक्टिविटी, unique activity. It often has a several sub, all of which are essential to maintaining a life. A sub essential.
So in a living organism, enzyme can speed up chemical reaction. Enzyme helps to bring the substrate together so that normal reaction can occur more quick. Okay, but they are not eaten in a process. तो वो प्रोसेस में कंज्यूम होता नहीं है. ओके, यस, प्रोसेस में कंज्यूम होता नहीं है. दे आर रिमेन एज इट इज. द assumption that both enzyme and the substrate have a intricate three-dimensional helps to explain the catalytic specificity. Yes. Okay, next one काय दिलं बघा, catalytic specificity of enzyme. This structure are complementary in that they allow the enzyme and substrate to fit together strongly, bringing the catalytically active region, the enzyme structure close to chemical bond of the substrate that are being altered during the reaction. The idea that specific features of the enzyme are काय दिले बघा इथं, are fit into the specific feature of its substrate, just as a key and lock model. Okay, so here is the key and lock model are there. These are the substrate and these are the enzyme. Okay, and if they are fitted, they form. Okay, and all of we know that the lock and keys are the unique model. ऐसा ये यूनिक मॉडल है ना. कौन सी भी चाबी एक स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी रहती है, कौन से ही ताले में कौन से ही चाबी नहीं लगते. लाइक दैट दे आर स्पेसिफिक इन. तो इंजाइम रहेगा, उस सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक ही पार्ट रहेगा जो इसमें इंटरैक्ट कर सकता है. सो हियर इज द लॉक की कॉम्प. सो हियर दे कैन से just as a key is a machine to match the configuration of a trumbles in the lock that is a unlock. Yes, it's conveyed by the term lock and a key model. Okay, lock and key model हम लोग इसे कह सकते हैं. For enzyme specificity, yes, specificity के लिए enzyme specificity this the lock and this concept is depicted figure. Okay, दिया हुआ है. तो इस तरह ये काम करते हैं. enzyme lock and key, enzyme lock and key model यहाँ पे दिया हुआ है. Then next one, the relative amount of the enzyme and the substrate can have a complex effect on how quickly an enzyme catalyze reaction. Okay, यहाँ पे क्या है, the relative amount of the enzyme and the substrate can have a complex effect on how quickly the enzyme catalyze reaction. Proceed. The Michaelis and Menton, these are the scientists. Okay, these are both the scientists, Michaelis and दोनों ने उसके ऊपर काम किया. and it is give the mechanism, okay, which assume a quick equilibration of an enzyme and substrate with their enzyme substrate. Explain the majority of these characteristics. Within this complex, the substrate is a transform. The reaction byproduct and the enzyme do not strong. Okay, enzyme और जो भी reaction का byproduct है strongly interact नहीं. Yes, the product disperse away after the substrate. The process can then be catalyzed by the enzyme by forming the complex with a different substrate. Okay. The simple case Michaelis-Menten mechanism E, ES, ES and P, where E, ES and P respectively stand it for a enzyme. E जो है E के enzyme है. Okay. S के लिए substrate है, enzyme substrate के लिए ES है. Okay. और enzyme substrate complex बनेगा उसके लिए ES है. एंड द P फॉर द प्रोडक्ट के लिए. ओके, तो इसके आगे हम लोग जब इक्वेशन हियर वी कैन यूजिंग दिस वर्ड yes, then ES and okay. So here E means the enzyme, S means the substrate, ES is the enzyme substrate complex and the P is the product. okay, अभी इसके आगे हम लोग जब भी लिखेंगे E का मतलब रहेगा enzyme, ES का मतलब रहेगा enzyme substrate complex, S का मतलब रहेगा substrate product. Okay, so here they can give the reaction. See, ES is equal to ES E plus S. Okay, so K and K1 is the rate constant. Yes, substrate transformation, that is the ES give us the E plus P. Okay, yes, see here ES is there. ES means, what is meant by ES? ES means enzyme
substrate complex. Okay, and this enzyme substrate complex is converted into the product, and we will get the our enzyme. जो एंजाइम है वो वापस हमें इधर आए. ओके, यस, और यही एंजाइम दूसरे रिएक्शन के लिए और से वर्कआउट करता है. ओके, जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या कहता है कि कैटलिस्ट बोल रहा है कि वो खाली रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद वो सेपरेट आउट हो जाता है. इट कैन नॉट बी केमिकली react with the react. Okay, so like that here enzyme is the same work as the enzyme catalysis. Okay, so enzyme as remain it is, it not converted into the product, separately we get our product. Okay, and the remaining enzyme which are again taking part in the another reaction. Yes, these are the mechanism of where k is the equilibrium constant for a dissociation. Dissociation के लिए हम लोग k जो था कैपिटल K is the equilibrium constant of the enzyme substrate complex, and the small k is the rate constant for the rate determining transition of the enzyme substrate complex into the product. Okay, so here we can write, since the first order decay of a enzyme substrate complex, that is the first order, फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग क्या कहेंगे, जो रिएक्टेंट है, reactant, only one reactant can be react. Okay, वो रिएक्ट कर रहा है तो इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिके. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज द प्रोडक्ट फॉर्मिंग स्टेप. द रिएक्शन रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी, क्या रहेगा रिएक्शन रेट, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई. ओके, लेटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी को हम लोग क्या कहेंगे एक्स, एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन enzyme and the substrate be E0. ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम था, इसे हम यस, और इनिशियल कॉम्प्लेक्स का जो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, मटेरियल बैलेंस. हियर वी कैन राइट E0 which is equal to plus constant, yes, can be written as, and H0 is equal to constant, yes, plus concentration of ES plus X. Okay, here we S means our substrate. Okay, here most experiments are done with the substrate present at the much greater concentration. That enzyme, that is the H0 is a very greater than E0. मतलब concentration of the substrate more and the concentration of the enzyme is a less in this case concentration of ES is a negligible. Yes, that means the concentration of ES, this value is a negligible in the H0 equation, and the concentration of a P substrate become S, that is the H0 minus A. H0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H0 minus X. The enzyme substrate equilibrium imposes the relationship. कौन सी relationship? It gives the relationship that, okay, so here we can write K is equal to concentration of E, concentration of S divided by concentration of ES. Okay, so simple, we have to write here E means the concentration of E, and S, instead of S we have to write this H0 minus. Okay, so here we write H0 minus X using this relationship, eliminate concentration of E. Okay, see, by using this equation from the expression of E0 gives, see, E0 is equal to K concentration of ES divided by H0 minus X plus ES, okay, which is equal to K concentration of H0 minus X plus 1, and ES जो है वो बाहर आ जाएगा. इक्वेशन कंसीडर करो, ये बाकी रहा है, ये जो ES था ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, ये ES था ये भी ब्रैकेट के बाहर आ गया. व्हेन वी मल्टीप्लाई ES by this value by ES, then we get the same value as K concentration of ES divided by H0 plus X. ये वैल्यू मिलेगी. Then the rate law for the product formation क्या रहेगा अभी, dx by dt, K concentration of ES K E0 H0 minus X divided by K plus H0 minus X. Okay, so here we can write if K is a very less than H0, yes, K का वैल्यू H0 minus X कुछ ज़्यादा कम है, and the dependence on the substrate cancel,
and the rate law become pseudo first pseudo zero. Okay, अगर यहाँ पे दिया देखो zero order. Okay. Okay, what is meant by zero order reaction? These are the reaction which is not depend on any reactant. Okay, उनसे भी reactant के ऊपर वो depend नहीं रहते. It's called as a zero order reaction. So here you can write dx by dt is equal to ke0, which is equal to kob, k observed. Okay, so here where k observed, zero order rate constant depend on the e0. कहाँ पे e0? If k is very greater than h0 minus x, yes, if the value of k is a very greater than h0 minus x, then the rate law becomes the pseudo first. Okay, तब हम लोग बोल सकते हैं कि तो रेट लॉ है वो फर्स्ट तो कर रहे हैं. Okay, so here we can write dx upon dt, which is equal to k e0 divided by k, in bracket we can write h0 minus x, which is equal to k obs, observe h0 minus x. Okay, next one, while pseudo first order rate law तो रहता है pseudo first order rate law constant k observe, which is equal to k e0 upon k, if neither of this simplification is applicable, fitting experimental data to the integrated rate law become in. Okay, in practice the integrated form of the rate law is a seldom used, as noticed earlier. Enzyme catalysis studies using the method of initial पूरा theoretical part दिया हुआ है, that is the rate is approximately equal to, is nearly equal to delta x on delta t. yes, यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था here dx by dt equal to delta x by x. what is the difference between the dx by दोनों में क्या डिफरेंट है बोलो. पहले लेक्चर में आपको बताया था द डिफरेंस एक्स एंड डेल्टा एक्स क्या होता है. वेरी गुड. ओके, डेल्टा मतलब जो डी लिखा है ना, डी, बोथ आर द डेल्टा, बोथ आर द डिफरेंसेस. ओके, but if you are using dx and dt, that means the difference is a very small. Okay, and if we are using delta, that's it, the triangle delta, okay, by triangular shape, that means the difference is a very big. Okay, so we can use the delta, that is a triangle x divided by triangle t, and if the small difference is there, then we can use dx by. yes, then next क्या दिया देखो, by measuring the amount of the product form over a short time interval delta t, in which x is very less than h. Okay, here one condition is given, x is very less than, here x is very less than h. Okay, in this case the rate and equilibrium constant can then be found by fitting the rate measure at a various initial concentration, that is the e0 and h0. so the equation becomes delta x by delta t nearly is equal to k e0 by h0 k plus h0. we get this equation. Okay, since the concentration of enzyme substrate complex, that is a, what is the enzyme substrate complex. Okay, this is named as the enzyme substrate complex. क्या कहेंगे इसे हम, enzyme substrate complex. Okay, then since the concentration of enzyme substrate complex, that is concentration, yes, is normally small compared to the concentration of substrate, the Michaelis mechanism can also be analyzed by applying the SSA, that is a steady state
approximation SSA to the concentration of ES. If the product forming step occurs so rapidly that the concentration of enzyme substrate complex is not maintained at equilibrium value, the steady state treatment become क्या करना पड़ेगा SSA approximation हमें ये है Michaelis Menten equation. Okay, so we have to carefully study this equation because I am surely say that this question can be asked in our exam. Okay, you have to do careful. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा ये पॉइंट मुझे लग रहा है. यू हैव टू बी रीड इट प्रॉपरली, इसको अच्छे से प्रिपेयर. Catalysis मेंटेन एग्जाम में पूछा. Then next point is the influence of the pH and the temperature on enzyme catalysis. pH और temperature का effect होता है enzyme catalysis. So here enzyme function as a catalyst in a biological system and are essential in accelerating the reaction up to the 1017. इतना फास्ट होना चाहिए हो जाएगा 1017. Okay, then they would be otherwise occur. High molecular weight protein called enzyme react with a reactant molecule to produce a one or more product. Studies on how pH and the temperature affect enzyme activity have provided important knowledge of the mechanism of enzyme. Extreme in a pH and temperature causes enzyme to become inactive. क्या दिया है? Extreme in a pH. pH यदि extreme हो गया, okay, and temperature भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया, then cause enzyme become enzyme जो है वो inactive. Yes, enzyme become. नेक्स्ट क्या दिया है देखो, इफेक्ट ऑफ पीएच का इफेक्ट क्या होता है. सो हियर सम डायग्राम आर गिवन हियर. these are the enzyme name पेप्सिन, सलाइवरी एमिलेज एंड सलाइवरी एमिलेज मतलब ये हमारे मुंह में जो भी हम लोग इसको सलाइवा बोलते हैं ना, वो एंजाइम है. पेप्सिन एक एंजाइम है हमारे बॉडी में होता है एंड पेप्सिन. these are the enzymes. हमारे एंजाइम दिए हुए हैं. हियर वी कैन से ग्राफ देखो एज अ पीएच दिया हुआ है देखो पीएच. ओके, तो सी जो सलाइवा रहता है हमारे मुंह, कहाँ से कहाँ तक पीएच है उसका 4 to अप टू 9 बोल सकते. आगे क्या दिया है देखो, एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक पीएच होता है. और जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो हमारे स्टोमक में होता है. क्या हुआ है, ऑल. Okay, so these are the location of the few enzymes which are given here. Pepsin which are present in our stomach, salivary amylase which are present in our mouth. One small trypsin is a present in our small intestine. Okay, so these are the pH are given here. Okay, the pH range is given here. So here every enzyme has a specific pH. The ionization of the R group of the amino acid can fluctuate depending on the pH. Okay, जो भी आर ग्रुप अवेलेबल है ज्वाइंट है अमाइनो एसिड के रिंग में, क्या हो गया, फ्लक्चुएट हो गया ड्यू टू द चेंज इन पीएच. चेंज इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑक्यूर व्हेन द चेंजेस ऑफ द अमाइनो एसिड वेरी. द न्यू शेप माइट नॉट. हियर दे आर गिविंग द एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी. ओके, सी सबसे ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी कब रहेगी, व्हेन द पीएच इज द सेकंड 2. पीएच में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किसकी रहेगी, पेप्सिन की रहेगी. ओके,
सलाइवरी एमिलेज की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कब रहेगी, जब पीएच अपना 7 रहेगा न्यूट्रल, ओके। और ट्रिप्सिन की कब रहेगी, जब पीएच 9 पे रहेगा। तब एक्चुअली दिस आर द ऑल स्ट्रेट लाइंस, ओके। थोड़ा प्रॉब्लम ड्रॉ करने में आ रहा है इसलिए दिस आर द स्ट्रेट लाइन, ओके। दैट मीन्स द पीएच 9 के ऊपर ट्रिप्सिन वर्क करता है, सलाइवरी एमिलोज पीएच 7 के ऊपर प्रॉपरली मैक्सिमम सी एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, ओके। एंड द पेप्सिन का एंजाइम एक्टिविटी पीएच 2 के ऊपर ज़्यादा रहेगी। these are the enzyme activity at a different one. The figure below demonstrates how the pepsin work best in an acidic environment. This makes sense because pepsin is an enzyme that is typically present in the stomach where the hydrochloric acid causes a low pH. Since pepsin is found in a duodenum, is in ideal pH should be in a neutral range to the match the duodenum. Okay, so here are the given example. So H2O2, this is our hydrogen peroxide catalysis, and it gives water plus O2 release as a byproduct of aerobic respiration. Byproduct है aerobic respiration, hydrogen peroxide that is H2O2 produces by the majority of a cell. Since hydrogen peroxide is a poisonous, the catalyst amylase must transfer it into the water. And how important of this, कितना ज़्यादा important, if this enzyme is absent, okay, क्या कहे देखो, since hydrogen peroxide is a poisonous, the catalyze enzyme must transfer it into the water and oxygen transfer, okay, because hydrogen peroxide has a poisonous, that's why we required the enzyme, okay। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एंजाइम की बहुत ज़्यादा जरूरत है। Here one example are given, hydrogen peroxide are converted into water and oxygen, okay, which are not harmful in human body or living cells. Yes, effect of temperature. Now the next point is what is the effect of temperature. See, the higher temperature typically result in a more molecular cooling which accelerate the rate of reaction, okay। that means temperature के साथ reaction, rate of reaction, okay। by using or by increasing the temperature, we can say that rate of reaction is also going to be increases, okay। rate of reaction is also going to be, yes, T is directly proportional to rate constant. Here we can say the rate of enzyme catalyzed reaction can be increased by increasing the livelihood of a substrate colliding with the enzyme activity start to decrease as a particular temperature because enzymes start to denature. Yes, here if the temperature range is in the between the 40 to 50 degrees Celsius, then we can say that enzyme are react more strong. But after the 50 degrees Celsius, its activity is going to, okay, see the rate of reaction and the temperature decrease. Molecule gain kinetic energy at the temperature of 40 degrees Celsius. And if you pass the temperature of this 40 degrees Celsius, then it is going to continuously down. And okay, after the 60 degrees Celsius, the rate of reaction is, okay, that means 60 degrees Celsius is the effect of temperature on enzyme activity. Yes, so next one is the optical temperature, optimum temperature. क्या रहेगा देखो, there is a temperature range where the maximum rate of reaction is attained for the each, okay, देखो they are highly specific in nature, okay। yes, that means हर एक enzyme के लिए वो जो temperature है वो अलग अलग रहेगा, okay। see here in this diagram they are showing the 40 degrees Celsius, the more rate of reaction is optimum temperature for the enzyme, but enzyme are highly specific in the nature. We can say for every enzyme they have a particular temperature. So here we can say the enzyme temperature optimum is defined as this maximum. Most enzyme perform best at the temperature around 90.
that means 37 डिग्री सेल्सियस. Okay, and all of we know that our body temperature is, क्या रहता है बोलो, बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? हेलो, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा? That means the ideal body temperature. Okay, and on that temperature the enzyme are react very fast, or we can say rate of reaction is faster at other temperature. Okay, so here the best performance at the temperature of the around 98.6 degree Fahrenheit, that means the 37 degrees Celsius. Additionally, some enzyme function well both at a low and high temperature. For instance, while animal, here some animals example are also given. While animal in a dry climes have an enzyme adapted to the higher temperature. Okay, so here dry climates, that means the, we can say the desert condition. Okay, about the desert condition, how the enzyme adapted to the higher temperature. Those in the Antarctic have them adapted to the lower optimum temperature. Okay, so here both are the given, that is the dry climate means we can say desert. Okay, and in Antarctic we can say the cold weather. Okay, so adapted to the lower optimum temperature. Enzymes are a still protein too, and like all proteins, they start to degrade at a temperature exceedingly 104 degrees. Okay, if we are moving the temperature around the 104 degrees Celsius, then it is going to be degrade. Okay, that means the structure of enzyme collapse. Okay, as a result, the temperature at which the enzyme start to the function and the temperature at which a protein start to break down are what determine the range of an active enzyme activity. See, temperature are very much important for the reaction, sorry, enzyme activity. Okay, so here some problems are given. Solve example. मला 9:30 वाजतील. Yes, here some example are given. Solve problem. Explain the enzyme log and the Ycmou. Here solution. Yes, we have to see this all portion at the just early the starting of this chapter. Solution: enzyme helps to bring the substrate together so that normal reaction. Here is the key and lock model are given here. Okay, these are the explanation given here. Okay. Yes. Then next one, what is the Michaelis Menten law? Okay, this equation also we in our previous slides or previous page. Okay, these are the explain the effect of pH on the enzyme catalysis. क्या है ये भी हमने देख लिया. Next one, these are the some checkpoints. Okay, true or false. The rate of an enzyme catalysis reaction can be decreases by increasing the likelihood of a substrate colliding with the enzyme active. Okay, most enzyme perform best as temperature around 98.6 Fahrenheit. ये true है. Enzyme help to bring the substrate together so that the normal reaction can occur more quickly. Yeah, true. Here we can say all these are the summary. Enzymatic catalysis is unique as a specific. Enzymatic catalysis show shock mechanism. Okay, the Michaelis Menten mechanism assume a quick equilibration enzyme and the substrate with their enzyme substrate. Okay, so which are written here, K equal to concentration of E, concentration of A. Mechanism of enzyme catalysis affected by the change the pH and the, okay, so these are the word here. These are the answer of the true or false. First one is the false and another two are the true. Here we complete this uh, enzyme catalysis. Okay, so here we stop the lecture. Okay, and when we meet next lecture, then we start the new topic, that is heterogeneous catalysis. Okay, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं अभी.